Do you want to be skilled in managing time, create a unique personality and get yourself out of the rat race? If the answer is yes, then stick till the end of the video because I'm gonna tell you how. Hey guys, welcome back to our channel, the Indian Philomath. I'm Yamini and today I'm going to tell you an amazing thing. Well, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे and the answer to those 3 questions represents a trait of a successful person. Well, अगर देखा जाए तो किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे हाँ उसकी माँ का हाथ तो होता ही है, बट उसके साथ साथ होता है एक सक्सेसफुल स्केड्यूल. Well, I'm very sure that इस लॉकडाउन में आप सभी लोगों ने अपने लिए एक स्केड्यूल बनाया होगा और पर उसको 100% फॉलो नहीं कर पा रहे होगे या फिर अब भी पूरी कोशिश कर रहे होगे उसको फॉलो करने की. And the biggest culprit behind it is time management. You know guys, जब भी हम एक से ज़्यादा चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे बड़ा इशू आता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का, कि टाइम कैसे मैनेज करें. कई बार बहुत से लोग बोलते हैं कि बी डिसिप्लिन, बी फोकस्ड, डिटरमिन्ड, बी रफ एंड टफ टुवर्ड्स योर गोल्स एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग. बट क्या कोई इजी वे आउट नहीं है? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है गाइस जिसमें हम अपना एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके, वो भी बिना किसी टेंशन के? So be happy guys, because there is a solution and it is called the Pareto principle or 80/20 rule. This principle was founded by Wilfredo Pareto. एक बार Wilfredo Pareto अपने गार्डन में घूम रहे थे, तब उन्होंने इस प्रिंसिपल को अपने पी स्पॉट्स में ऑब्जर्व किया. He noticed that 80% of his freshly grown peas comes just from 20% of the pods. Well, from just this small observation, this principle got discovered and then later on got universally accepted. Pareto principle ये कहता है that 20% of our priorities gives 80% of the productivity. Well, ऐसा कैसे होता है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. Well, हम सभी लोगों ने अपनी स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी that there are 2 types of students. In first type आते हैं वो लोग जो 3 days के साइलेंसर जैसे होते हैं, जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं. But the second type is more like rancho category. Well, वो सिर्फ एग्जाम के 2-4 दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड जब रिजल्ट आता है तो दोनों के मार्क्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं. क्या दूसरे टाइप के स्टूडेंट फर्स्ट टाइप से ज्यादा इंटेलिजेंट है? Well, maybe, but the second type के students जाने अनजाने में यूज करते हैं Pareto principle. वो 20% टॉपिक्स को कवर करते हैं जिनका वेटेज एग्जाम में 80% होता है. Because ऐसा बोला भी जाता है guys that a book has 80% of the contents that revolves around only 20% of the topics. Well, अगर आपने उन 20% of the topics को पक्का कर लिया तो आपके 80% of the marks तो कहीं नहीं गए. We can see Pareto principle in almost everything. अगर बिजनेस में देखें तो 20% of the customers gives 80% of the revenue. 20% of our clothes are worn by us 80% of the times. In relationships, 20% of our friends makes us 80% happy. And a fun fact that in a picnic, just 20% of the people eat 80% of the food. Well, हमने ये तो जान लिया कि हमारा दिया गया 20% हमारा 80% आउटपुट निकालता है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता होता कि व्हाट्स आर एक्चुअल 20%. अगर सिंपल भाषा में बोलें तो व्हाट आर आवर एक्चुअल प्रायोरिटीज एंड व्हाई इज इट इवन इम्पोर्टेंट टू हैव अ प्रायोरिटी लिस्ट? बिकॉज आजकल सब लोगों को ये तो पता है कि क्या करना चाहिए, बट ये नहीं पता कि क्या नहीं करना चाहिए. एंड आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज क्या नहीं करना चाहिए आर दी एक्चुअल टाइम वेस्टर्स. So get yourself ready, because अगले 1 मिनट में मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी प्रायोरिटीज को टॉप टू बॉटम अरेंज कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी प्रायोरिटीज को 4 क्वाड्रेंट्स पे डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. ऑन द बॉटम पुट थिंग्स विच आर लीस्ट अर्जेंट एंड लीस्ट इम्पोर्टेंट. On number 3, place things which are more urgent but less important. Then in the second place, put tasks which are less urgent but more important. And on your first priority should be those things which are most urgent and most important. So अब आप जानते हैं कि आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज क्या हैं. So the next step is to keep those priorities intact in their place, and for their smooth functioning, you can simply follow these 3 simple E's. First E is evaluate. Evaluate your priorities every month by constantly reviewing the results, rewards and returns.
Number 2E is to eliminate. Eliminate those tasks which are currently done by yourself but they can easily be done by anyone else. Number 3E is to estimate. Estimate those big tasks that you're going to be doing this month and also estimate the time and energy you're going to be giving in them. So do define your priorities, guys, by using the Pareto principle and the technique that I told you earlier. Because as it is also said that too many priorities paralyze us. So I would like to end this video by an amazing quote which says, efficiency is the foundation for survival, but effectiveness is the foundation for success. So we should be effective rather than being just efficient, right guys? So that's it for today, guys, from the Indian Philomath. I really hope you liked this video, and if you did, then hit the like button and show some love in the comments. And don't forget to subscribe our channel and share it with your other friends too. So if you really found the Pareto principle and the techniques which I told you really helpful, then don't forget to tell us and DM us on Instagram and Facebook. Or you can just pour your heart out in the comments below. So we'll be back, guys, with another concept and another tales, and we'll see you guys next time. Bye bye.